ओके, गुड टू सी यू इन दिस वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने पहले वाले सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं और गेम ये है कि मैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स लिखूंगा और आपको उन नंबर्स को याद करना है। यू विल हैव टू मेमोराइज दोज नंबर्स। आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ टेस्ट टू टेस्ट योर मेमोरी। ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो कुछ रैंडम नंबर्स और ये नंबर्स पेयर की फॉर्म में होंगे। और अगर मुझे सपोज अगर हमें 2 लिखना है देन इट विल बी 02। ऑलराइट, आप आगे सीखेंगे कि ये नंबर्स कैसे आपको याद करने हैं। सो आई ट्राई कि मैं इसको इंक्लूड कर लूँ इस कोर्स में, बट इट्स जस्ट टू टेस्ट द मेमोरी। ओके ओके, सो रैंडम नंबर्स 1709 1851 37। ये 10 नंबर्स हैं। I think I'm sure that you'll be able to memorize these numbers within a minute or two, or might be less than. So let's take one more line. Then it is 25 8 9 1 4 7 5 6 3। आप कितनी देर में होंगे? चलो एक लाइन और ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 2764। ओके, 09 8314। बीच में कुछ रिपीट नंबर भी ले सकते हैं, जस्ट टू कंफ्यूज आवरसेल्व्स कि 09 एंड देन 09 अगेन। ओके, सो एक लाइन और ले लेते हैं। ओके, देन इट इज क्या 55499620। ओके, 71। All right, now we have 40 numbers. ओके, एक लाइन अभी खाली दिख रही है, तो चलो एक और ले लेते हैं लास्ट। ओके, 73। ओके, 43। ओके, 7343 9156 and 73. 73 is already there, so we'll take 77. ओके, अब आपको ये 50 नंबर्स याद करने हैं। कितनी देर में आप इनको कर पाते हैं? पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दैट। जो भी आपका आंसर हो, जितने भी आप कर पाते हैं, दैट्स ओके। मेंशन योर whatever your answer is in the comment box. I will be reading them. Okay, जब आप वापस आते हैं, so just pause this video and try. All right, so कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपने आपने कितने नंबर्स आप अटेम्प्ट कर पाए, कितनी मिस्टेक्स हुई एंड कितना टाइम लगा। ओके, सो लेट मी ट्राई। वी हैव 50 नंबर्स हियर and I'll just go through these numbers, right? आप टाइम चेक करो, how much time it takes. Okay,
So 17 0 9 1 8 5 1 3 7 2 5 8 9 1 4. Okay, 7 5 6 3 2 7 6 4 0 9. Okay, 8 3 1 4. Okay, then fourth line is 5 5 4 9 9 6 2 0 7 1. Okay, then last one is 7 3 7 3 4 3. Okay, 7 3 4 3 9 1 5 6 7 7. ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ एंड लेट्स सी कि कितनी मिस्टेक्स होती हैं. अगर 50 नंबर्स में से 2 या 3 नंबर अगर गलत भी हो जाए तो आई थिंक दैट्स ओके. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट मैं अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता हूँ एंड विद क्लोज्ड आइज, राइट, ताकि आपको ये ना लगे कि आई एम लुकिंग इन द स्क्रीन, looking at like in the screen. Okay, so the numbers are 1 7 0 9 1 8 5 1 3 7 2 5 8 9 1 4 7 5 6 3. Then it is 2 7 6 4 8 3. Sorry, 2 7 6 4 0 9 8 3 0 9 8 3 1 4. Then the next line is 5 5 5 5 4 9 9 6 2 0 7 1. And the last line is 7 3 4 3 9 1 5 6. And the last pair is 7 7. Okay, क्या आपको कोई मिस्टेक मिली? इफ यस, टू मेंशन दैट. ओके, ये हमने नंबर्स याद किए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट. अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन नंबर्स को बॉटम टू टॉप भी हम याद कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल? 50 numbers from bottom to top. Let's try that. Okay, so I am again gonna look up with closed eyes and let's see. So numbers from bottom to top are 7 7 6 5 1 9 3 4 3 7. And then it is 1 7 0 2 6 9 9 4 5 5. Then it is
Okay, did I mention? Let me start from the bottom again. I got confused. So from bottom to top, the numbers are 7765193437 1702699455. Then it is 4138904672, and then it is 3657419852, and then it is the last line 7315819071. ओह, आई एम नॉट श्योर कि कितने गलत हुए हैं, कितने ठीक हुए हैं, बट आई ट्राइड. Just mention that if I was able to make it. And as I said again, अगर 2-3 नंबर अगर मिस्टेक हो भी जाती है then it's okay. But practice makes it perfect. Perfect वैसे ठीक है, but you are making mistake, that means you are trying. Okay? So what's your memory says? Try this. It's a funny game. Try with your kids. ये गेम मैंने आपके साथ इसलिए खेला क्योंकि शायद हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो एक अलग लेवल पर आ चुका है. बट अगर आप ये गेम बच्चों को दो तो बच्चों का जो माइंड है वो एम्प्टी माइंड होता है. दे आर लर्निंग इन, जो भी उनकी एज है उस एज में वो लर्न कर रहे हैं, और उनके माइंड में बहुत सारी टॉक्सिक्स या मतलब कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग अभी नहीं हुई हैं जो कि एक अलग लेवल पर उनको ले जाए, नेगेटिव स्टेट में ले जाए. तो वो बहुत इजीली याद कर लेते हैं. और आपने देखा भी होगा कि बच्चों को चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं. अपना टाइम याद कीजिए, राइट. बट एट दिस लेवल बहुत सारी टॉक्सिक्स, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड आर इन दी सबकॉन्शियस, और वो कहीं ना कहीं हमें ये सब करने से होल्ड करती हैं. सो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. इफ यू enjoyed, just mention that yes, I enjoyed it, and try playing with your kids. Okay, let's move to the next video. Bye bye, see you.